if your mind took instructions from you, would you create anxiety? No. So don't look for answers elsewhere, elsewhere, elsewhere. It is just that your own physiology and your psychological patterns not taking instructions from you. So you said so many things, I try, whatever these big words are floating all over California particularly, about surrendering to it, about letting it go, about… Not for one person has such a thing worked, ever. Has it, I'm asking you? You have anxiety, try to let it go. Does it go? Even a damn flu doesn't go. Yes or no? Even a simple cold does not go, you say go, does it go? So, let's not get into this fanciful states of surrendering, these are all words thrown around. Nobody knows what is surrender. Because when it happens, you will not know it has happened. You can't do it, I surrendered. How's that possible? So, leaving those things, essentially, as I said, you have not read the user's manual of how this works. We need to pay attention to this. The system is made in such a way, if you hold your hand like this, it'll work one way. If you do like this, it'll work another way. If you do like that, it'll work another way. It's a phenomenal process. If it was a simple thing, we could have just beaten it into shape with hammer and anvil, okay? It's too sophisticated. It's a phenomenally complex machine. One needs to pay a certain level of attention to be able to use it for what it is designed for. Otherwise, it'll get itself messed up. Now, there may be many factors, there may be genetic factors, there may be sociological factors, there may be growing up issues, various things. But do not ascribe your problems to any of those things. The important thing is just this, you are not able to have your mind the way you want it. That's the only problem you have, isn't it? The moment you ascribe it, I'm like this because my father was like that, I'm like this because my grandfather's genetics were not okay, you're finished. Because we can't change those guys now. Yes? You can't choose a different father or a different grandfather now, it's over. But you can transform this. You must understand, still it doesn't matter you have anxiety disorder. Still, if you put a piece of carrot, there is an intelligence here which can transform a carrot into a human being. That means every day a new body is being manufactured within you, isn't it? In parts, a new human being is manufactured every day. When the very source of creation is functioning within you and a new human being is constantly being created, if you take little charge of that, you can create an entire new physiological and psychological process. This is the way to change people. कि भगवान हमें कैसे बदलते हैं, उसी तरह हमारे पास भी सेम क्षमता है कि हम दूसरों को भी बदल सकते हैं। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम दूसरे को बदल सकते हैं या दूसरे की कमजोरी देखकर हम कमजोर हो सकते हैं। ऑप्शन है, सामने वाले के पास कोविड है, ऑप्शन हमारे पास है कि या तो हम भी उसका कोविड ले सकते हैं या हम उसका इलाज करवा सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन है, लेकिन उसका इलाज करवाने के लिए पीपी किट पहले खुद पहनना पड़ता है, खुद पहनना पड़ता है। ऐसे ही जाके उसको हाथ लगा दिया, उससे जाके 5 मिनट बात कर ली तो उसका कोविड ले लिया, और फिर सिर्फ ले नहीं लिया, फिर उसका कोविड लेके हम घर आते हैं। हम घर आते हैं मतलब जब हमने दूसरे का अवगुण देखा और मन चित पर रखा, वो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं करता, हम जहां जहां जाएंगे हमारे साथ वो अवगुण हमारे ऑरा में, हमारे वाइब्रेशन के साथ हमारे साथ 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 जाता है। इट इज लाइक ट्रांसमिटिंग दैट कोविड टू एवरीबडी। कोविड और इमोशनल इन्फेक्शन दोनों बिल्कुल सेम लगती हैं। आज आप बाहर जाकर किसी को कहना मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, वो पहले आपको ऐसे देखेंगे, अच्छा, पहले तो सोचेंगे ये झूठी बोल रहा है, फिर हम बोलेंगे नहीं सच्ची में मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अच्छा, मैंने झूठ भी कभी नहीं बोला, मैंने झूठ कभी नहीं बोला। और मुझे जेलसी तो पता ही नहीं है कि क्या होती है, कैसे किसी से जेलस हो सकते हैं अगर किसी ने कुछ अच्छा किया हो।
अच्छा, और मैं सिंसियर भी बहुत हूँ। इससे ज्यादा तो वो सुन भी नहीं पाएंगे, कहते हैं आप इस दुनिया के ही नहीं हो, आप नॉर्मल ही नहीं हो। नाउ वी हैव रीच्ड दिस स्टेज कि अगर कोई कहे कि उसको गुस्सा नहीं आता, उसको टेंशन नहीं होती, उसको चिंता नहीं होती, तो कहेंगे आप नॉर्मल नहीं हो। दिस इज अ क्रॉनिक बीमारी है। इससे बड़ी क्या एपिडेमिक हो सकती है कि जो गुणों के लिए कह रहे हैं आप नॉर्मल नहीं हो, और अवगुणों के लिए कहते हैं हम ये तो नॉर्मल है। ये बहुत बड़ा एपिडेमिक है, ये बहुत बड़ा एपिडेमिक है। इसके लिए समाज की डेफिनेशन में चेंज लाना है, और वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी